Good morning, students. Today I am going to teach you chapter number 4, Carbon and its compounds, part 4. In the previous lecture, I told you about the hydrocarbons and their type and homologous series. And now I am going to discuss about the functional group. The functional groups are the group of atoms which gives the specific chemical properties when they are attached to the carbon chain. And for example, alcohol and halogens, unsaturation, the double bond and triple bond, and aldehyde, ketone, etc. They are called the functional groups. The nomenclature of organic compounds. क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल होता है कि आप जो है बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम याद कर सकें. So that to make the easy, and we followed some rules for their nomenclature. हम नाम के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं. And for example, the saturated hydrocarbons, इसमें एक कार्बन होता है, मीथ, ईथ 3 कार्बन, प्रो 4 कार्बन, ब्यूट एंड 5 कार्बन वाले में हम पेंट लगाते हैं. एंड सिमिलरली फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स में अल्कोहल जो कि OH होता है और उसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं ओल. पेरेंट हाइड्रोकार्बन के नाम के साथ ओल लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल C2H5OH एंड वी कॉल इट बिकॉज 2 कार्बन वाला कंपाउंड जो है वो ईथ और ओल इज द सफिक्स, तो इथेनॉल. एंड इन केस ऑफ एल्डिहाइड, द एल्डिहाइड में जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम होता है, कार्बन का नंबर गिनकर उसके सफिक्स को अल लगाते हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल CH3CH2 and CHO, it is known as propanol. And ketones, the functional group of ketone is CO, and ketone में suffix लगता है ONE, on. And for halogens the prefix is used. halogens में prefix लगाते हैं halo. And for F fluoro, Cl chloro, Br bromo, I iodine. And now we discuss the some compounds and their names. For example, CH3CH2 and CHO, this is propanol. And ट्रिपल बॉन्ड जो होती है उसमें आइन लगाते हैं, YNE. वी यूज द सफिक्स आइन. फॉर डबल बॉन्ड इन इज द सफिक्स. एंड फॉर द halogens prefix is used. For example, C2H5Br, it is known as bromoethane, and so on. And now the chemical properties of carbon compounds. Carbon compounds की important properties. The first, carbon compounds burn in air and gives carbon dioxide, water and heat and light. For example, when ethanol is burned in air means oxygen, it is converted
into carbon dioxide, water plus heat and light. And the carbon burns in air or oxygen to give कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एंड लाइट. जब कार्बन ऑक्सीजन में बर्न होता है, इट चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड. नाउ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड मीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है. Saturated hydrocarbons burns with a blue flame in the presence of the sufficient oxygen. जब काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं, they are converted into carbon dioxide, water, heat and light. But in presence of limited oxygen, they burn with a yellow flame, smoky flame, yellow smoky, यानी धुएं वाली येलो फ्लेम के साथ जलते हैं. The unsaturated hydrocarbons burn with a yellow smoky flame. इसको सूदी फ्लेम भी कहते हैं. The gas and the kerosene oil used at kerosene oil used at human homes has inlet of the air. If they are choked, then due to absence or the very limited amount of oxygen, they burn with a yellow smoky flame. And the sulfur and nitrogen present in the kerosene oil also convert it into sulfur dioxide and oxides of nitrogen. Now the next property is oxidation. Oxidation of ethanol in the presence of oxidizing agent gives ethanoic acid. Now the question, what are oxidizing agents? Oxidizing agent वो होते हैं उन स्पेसिफिक सब्सटेंसेस की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन होता है, देन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है. फॉर एग्जाम्पल, इन इथेनॉल in presence of alkaline KMnO4 on heating or with acidified potassium dichromate, it is converted into ethanoic acid. And the oxidizing agent we used for this purpose are potassium permanganate, alkaline, potassium permanganate, acidified potassium dichromate, etc. Now addition reactions. Addition reactions takes place in unsaturated hydrocarbons in the presence of the catalyst such as platinum, nickel or palladium. This process is known as hydrogenation. For example, in presence of nickel or platinum catalyst, ethene is converted on hydrogenation into ethane, and propene on hydrogenation in presence of nickel converted into propane. Now next type of reactions are substitution reactions. Substitution means exchange of an atom by another atom. And substitution reactions takes place in saturated hydrocarbons, especially, for example, when chlorination occurs
in presence of sunlight in methane, the one by one all the hydrogen atoms of methane substituted by chlorine atoms and giving the carbon tetrachloride. Now students, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you students for watching video.